Good morning, everyone. I hope you all can hear me and see me. Please write yes in the chat. Nikunj, I have sent you a request to join in the stage. Thank you for the confirmation. Yes. Nikunj, I hope you can hear me clearly. Yes. Am I audible? Yes, sir, you are clearly audible. Perfect. So give me a minute and then we are good to go. So, guys, welcome to the morning session. Today we have Nikunj with us. We'll start with the index outlook, important events in the market, things that we need to keep on our watch list. Then we'll move towards the support resistance for all the indices and a quick overview of the Nifty because we have the Nifty expiry tomorrow. Then we'll move towards the stocks on radar and see if we can have a good intraday trade or not. So Nikunj, over to you. Okay. So good morning, everyone. Welcome to the morning session. एंड स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के बारे में. आई थिंक आज थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी. आई थिंक बैंक निफ्टी इज डूइंग प्रीटी वेल. निफ्टी इज ट्राइंग टू कैच अप. तो अगेन रिविजिट द सेटअप्स एंड द लेवल्स ऑन निफ्टी. निफ्टी लास्ट 5 दिन में 3 बार इट हैज टेस्टेड 22,800 एंड बुल्स आर रेजिलिएंट नियर दैट जोन. तो 22,750 एंड 22,800 ये बुल्स 5 दिन से लास्ट 5 दिन से 4 बार वो टेस्ट किया है. इट हैज मेड अ लो नियर 22,730 725 बट इंटरडे वहां से बाउंस बैक आ रहा है. So bulls are resilient at 22,750 800 zones, but ऊपर में immediate hurdle भी है 23,100 and 23,333. तो ये 500 पॉइंट का बैंड है फॉर दिस वीक. आई थिंक आई टुक द सेशन ऑन मंडे एंड वहां पे भी आई हैड मेंशन्ड दैट ये 500 पॉइंट का रेंज रहेगा. यहाँ पे नीचे में 22,750 इज इमीडिएट सपोर्ट एंड क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो ब्रेक करता है then we can see further corrective move towards 22,500 and 22,222 are the next levels. But as of now, we are holding the lower band of this wedge जो बना हुआ है on the daily scale. I'll quickly show you as well. ये एक downward sloping wedge pattern है on the daily scale and it is holding the lower zones and we are seeing some bullish divergence on the mechanical indicator as well. So as of now 22,750 22,800 bulls hold कर रहा है and we are holding that and so we could see some pullback towards 23,100 and 23,333 as of now. The main thing is आज बैंक निफ्टी थोड़ा लीडरशिप ले रहा है. लास्ट 2-3 दिन से it was consolidating and if you see बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी आज रिलेटिवली आउट परफॉर्म भी कर रहा है. इज होल्डिंग 49,000 ऑन एन इंटरडे बेसिस. आज 40,000 48,800 का लो किया है एंड 48,800 and 48,750 आर द इमीडिएट सपोर्ट फॉर दिस वीक. तो जब तक 48,800 48,750 के ऊपर है वी कुड सी अ पुल बैक मूव टुवर्ड्स 49,350 550 and 49,750. Although the range is a bit smaller on the hourly scale if we see, तो एक जो चैनल डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था उसके हायर जोन पे आया है. अंदर रेजिस्टेंस इज नियर 49,350. तो जब तक ये रेजिस्टेंस पॉइंट क्लियर नहीं होता है तब तक आई थिंक ये 300-400 पॉइंट के रेंज में ही रहेगा. अगर 49,350 के ऊपर कन्विंसिंग क्लोज आता है then we could see the rally extending towards 49,850 or 750. But as of now 48,800 and 49,250 350 is the range for the time being even for intraday or for 1-2 day per se. तो ये 500 पॉइंट का रेंज है इन बैंक निफ्टी. Convincing close above 49,350 can see the rally can extend towards 49,750 48,800. हालांकि नीचे में multiple supports 48,800 and 48,750 are the multiple support zones. So these are the main levels that we are working with for Nifty and Bank Nifty. Nifty थोड़ा सा आज sideways to ये है. But Bank Nifty is taking the leadership as of now. So we'll see how things pan out. HDFC Bank is doing relatively well. Even for that matter, Kotak, which has outperformed all the private sector majors, is doing well today. And Axis sort of flattish है. ICICI Bank is the main culprit as of now. I think जब तक वो काफी 3-4 दिन से underperform कर रहा है. And till the time HDFC, ICICI and HDFC they don't come in full swing, एक रेंज बाउंड मूवी रहेगा. एचडीएफसी का अगर आई क्विकली शेयर द चार्ट तो एचडीएफसी इज ट्राइंग टू मेक
the high lows यहाँ पे bullish engulfing किया था 2 दिन पहले, and it's trying to support the index on the way up. But if we see ICICI Bank, I think थोड़ा सा लगा रहा है. I think it's making lower highs on the daily scale, but नीचे से आज recovery है, but still it is trading at the lower end of the setup rather than clearing the 20 or 12 1280 का level. तो ICICI Bank जब तक full flow नहीं आता है, Bank Nifty won't see a thrust above 49 500 and 49 800. But as of now, HDFC is trying to take the leadership. So because HDFC and ICICI almost ये दो banks मिलके over 40-50% weightage है in Bank Nifty, so which is why ये दो stock क्या करते हैं, that is more important if we are tracking the rate sensitive index. So ICICI needs to take the leadership as of now, but it's still in this range. But HDFC Bank थोड़ा सा try कर रहा है, even Kotak for that matter is doing good. I'll quickly share the Kotak Bank का chart. It's trying to make higher highs and clear this resistance point of 1990. So as of now, we'll see it's mixed setup, but Bank Nifty trying to take the leadership as now 49,200 के आसपास है. 49,350 is the immediate hurdle. अगर वो clear करता है, then the rally could get extended towards 550, 750 on the higher side. So these are the levels for index and Nifty and Bank Nifty. Nifty कल expiry है, तो Nifty में 22,800 would be very crucial. अगर वो hold कर रहा है, तो we could see a pullback towards 23,100, which is the immediate resistance, and the next is 23,333. So these are the levels for index, for both the index. अगर stock की बात करें, तो एक stock जो intraday play के लिए देख सकते हैं is PCBL. So I'll quickly share. So it has given on the 15-minute chart पे एक range breakout दिया है. So PCBL is one stock which is looking good for intraday. That as of now it is quoting at 377. What we can do is buy at CMP, keep a support of 365 and look for a target towards 385 and 390 on the higher side. So PCBL is one stock which is purely an intraday play. We can buy at CMP. अगर 375 के आसपास आता है, तो we could add, keep a support of 365 and look for 385 and 390 on the higher side. So PCBL is one stock for intraday play. अगर किसी को आज purely intraday play करना है, तो they could consider PCBL. And one more stock is looking very good is IREDA. is after काफी टाइम बाद जो PSU स्टॉक्स है उसमें थोड़ा सा मोमेंटम हमें लोअर बैंड से देखा जा रहा है. तो अगर 15-minute चार्ट फॉर इंटरडे प्ले देखें, तो इट इज शोइंग सम बुलिश रिवर्सल फ्रॉम द लोअर जोन एंड स्ट्रॉन्ग दो बुलिश कैंडल किया एंड द मोमेंटम कुड कंटिन्यू. सो व्हाट even IREDA is looking purely intraday. Don't try to carry the trade forward. You can buy at CMP, that is 166. Keep a support of 162 and look for target towards 172 and 174 on the higher side. So PCBL and IREDA, these are purely intraday trades. So please manage your positions accordingly and don't carry any position. जो intraday है, please try to exit on intraday basis only. Don't try to carry the trade forward as of now, because we clearly mention अगर कोई position trade है, तो we'll mention that CDI है, तो it has a time horizon of 5 to 7 days. Intraday is purely intraday, so don't try to carry the trade to the next day. I think these are two stocks as of now radar पर है, and we have already shared both the trades. तो अगर कुछ और ट्रेड समझ में आएगा, तो we'll definitely share and tell the trades. But as of now, IREDA and PCBL are the two trades that are looking good for purely intraday trades. So I think कल थोड़ा सा pharma में भी I'll quickly give an update wherein there is some tariffs on pharma as well. So the tariff war थोड़ा सा problematic हो रहा है for the other emerging countries, because major अपने 3-4 players है, they have a lot of exposure and they have export to the United States. So which is why a few stocks who are exporting to the US, there are Aurovindus and Ciplas, they are seeing some थोड़ा सा pressure. So be mindful of that, and which is why थोड़ा सा news flow आता है, which is the main reason why there is a lot of gaps on individual stocks and even in the market.
तो which is why it is थोड़ा सा risky to carry the trade to the next day. जो भी है intraday, if you're getting some money छोटा सा 1-2% का, then you should try to book your profits or exit the position on a purely intraday basis only. Don't try to carry the position because there are a lot of news flows going around in the market. So I think दो trades we have given. I think अगर कुछ और रहेगा तो we'll definitely intervene and share. I think in the meantime, if it's possible, we could take few queries. Anuj, if we have some, we could answer them. जो हमारे viewers हैं उनके trades कुछ रहेंगे फंसे रहेंगे, then we could help and try and navigate the trades. Sir, your view on HAL? Okay, so HAL आज अच्छा रिकवरी दे रहा है. आई थिंक अगर मैं डेली स्केल पे देखूँ आज थोड़ा सा डिफेंस में थोड़ा मोमेंटम है. BL, HAL, BEML. I'll quickly see what is there. Although it is making lower high, lower lows from last few trading sessions, आज नीचे से अच्छी रिकवरी देखी गई है. तो we need to see how this pullback moves कितने दिन तक रहता है. लास्ट 5 दिन से it is making lower highs. कोई भी दिन previous day high क्रॉस नहीं किया है, तो एक थोड़ा सा वरीसम है. बट एज ऑफ नाउ इंटरडे, प्योरली इंटरडे देखे तो वी कुड सी सम पुल बैक टुवर्ड्स 3450, 3480, जहां से आई थिंक वी कुड सी सम सप्लाई अगेन. तो 3485 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट एंड नीचे में 3250 का एक सपोर्ट है. अगर 3250 ब्रेक करता है देन इट कुड करेक्ट फर्दर टुवर्ड्स 3150 एंड 3000. So Zomato? I think Zomato is relatively doing good. आज भी I think लास्ट 2 दिन से थोड़ा सा एक बॉटम आउट हो रहा है. नीचे में 208, 210 इज द इमीडिएट सपोर्ट. तो जब तक 212, 210 नहीं ब्रेक करता है we could see this gradual move towards 235 to 40 के आसपास. तो ये एक रेंज में हो गया अभी. आफ्टर शार्प करेक्शन इज कंसोलिडेटिंग. तो नीचे में 210 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 235 to 40 का एक रेजिस्टेंस है. तो दिस इज द वे वी नीड टू गो अबाउट in the market because there are a lot of stocks which are showing some reversal signs, but as of now it's not reversal, but it's a range bound trade. So we need to be careful how we play about. But 210, 212 एक strong support है. We could see this gradual move towards 235, 240 on the higher side in Zomato. Sir, NBCC bought at 250. NBCC at 240. Yeah. I think उसमें corporate, I think adjustment he has not taken into consideration. I think bonus आया था 1:1 or some corporate action is there, so it won't be 240. उनका price could be 120 अगर वो adjustment रहेगा तो because there's surely some corporate event. I think it's split or bonus. Can't remember it right. So it would be 120 अगर 240 है तो 1:1 bonus था शायद. So I think as of now it is holding 77-80 zones. So I think we could see this rally or pullback move towards 80, 85, 85, 86. तो रेंज बाउंड है, ऐसा कोई थ्रस्ट नहीं है, लेकिन नीचे से पुलबैक आ रहा है इन मेजर पीएसयू स्टॉक्स, जहाँ पे इवन आज हमने देखा कि कुछ डिफेंस नेम्स, कुछ रेलवे नेम्स, दे आर सीइंग सम पुलबैक मूव्स फ्रॉम द लोअर जोन्स. तो we'll see. As of now 78 is the support, ऊपर में 85, 87 is the resistance for NBCC. Sir, Maruti 13,000 call at 65. So Maruti is doing good. Out of all the Maruti and M&M are outperforming the other four-wheeler auto stocks. तो मारुति में 12,600 का एक सपोर्ट है. तो जब तक 12,600 के ऊपर है, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड योर लॉन्ग इन मारुति, बी इन कैश मार्केट और वाया ऑप्शन. तो नीचे में 12,600 का सपोर्ट है. जब तक 12,600 के ऊपर है, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड एंड लुक फॉर टारगेट इन द स्पॉट टुवर्ड्स 13,100. तो 500-600 पॉइंट का एक अप मूव आ सकता है जब तक 12,600 होल्ड करे मारुति.
Sir, your view on auto industry. So auto as a whole pack, I think Tesla का कुछ news surround हो रहा है that they are trying to come into India. तो वो थोड़ा सा एक अगर इंडिया में आता है तो there could be some pressure on the EV side of the business, be it M&M का EV, Tata Motors does more in EV. तो ये दो players को थोड़ा सा एक hamper कर सकता है because there is more competition and Tesla being a proven name, they have major uh, powers with regards to the financials. तो थोड़ा सा एक डेंट हो सकता है as of now, but these are all speculation. Till the time it is not uh, done on the ground level, it's only speculation. But अगर Tesla it makes an entry in India, that could be थोड़ा सा sentimentally negative for M&M and Tata Motors because they are the major EV players in India. So as auto as a whole, M&M relatively M&M and Maruti are relatively doing good. Even ये दो stock में अपना Q3 numbers out of all the auto stocks, these two has posted good results. Tata Motors थोड़ा सा soft था, which is why the stock is trading at 52-week low, and Maruti and M&M are relatively outperforming the other four wheelers auto. So as of now, Maruti and M&M are the leaders and they're doing good. But I think auto ancillary से play करना better रहेगा in the auto. I think Samvardhan Motherson is one stock. I think we have a CDI idea on that also. So I think Samvardhan Motherson is a better play if you want to play the auto industry rather than going straight into OEM, that is जो manufacturing करते हैं. Sir, IndusInd Bank, buy or sell at the current price. तो इंडसिन एक रेंज में है बट अगर आपको बाय करना है तो कीप स्टॉप ऑफ 1010 एंड यू कैन टेक अ ट्रेड. लास्ट 5 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है तो अगर ऊपर में 1040 1050 निकल जाता है तो वी कुड सी सम दिस रैली थोड़ा सा एक रैली कैन बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स 1080. सो 10 एंड ये स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं. लुक फॉर टारगेट टुवर्ड्स 1060 1080. Sir, Samvardhan Motherson. As I said, I think Motherson is looking good. नीचे से अच्छा रिबाउंड आ रहा है. वीकली स्केल पे अगर देखें स्टॉक इज रीटेस्टेड इट्स ब्रेकआउट जोन जो आया था यहाँ पे, ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है, वहां से एक सपोर्ट ले रहा है. तो 120 is the support. 120 जब तक होल्ड करता है I think the stock can see a move towards slow है, थोड़ा सा low beta है, so we could see a move towards 135 and 140 on the higher side. Bearing in mind 120 should be your stop. So 120 के stop से you could see 135 and 139 on the higher side in Samvardhan Motherson. IDFC First Bank. I think IDFC it is consolidating but नीचे में 5880 का एक सपोर्ट है और होल्ड कर रहा है. तो ऑल्सो रेंज बाउंड है, सच कुछ है नहीं, कोई कट एंड थ्रस्ट नहीं है वहां पे, तो हार्डली 1.5-2 पॉइंट का मूव आता है IDFC फर्स्ट, बट नीचे में 5880 होल्ड कर रहा है. तो 5880 के सपोर्ट से यू कुड सी a move towards 62 on the high side in IDFC first. Sir, CDSL call for today. So CDSL, I think lot of mid cap and small caps are seeing थोड़ा सा momentum आज after many days, almost 3-4 वीक के बाद थोड़ा सा एक momentum आ रहा है. तो प्योरली अगर इंटरडे प्ले के लिए देख रहे हैं तो यू कुड सी सपोर्ट है 1150 का and we could see a target towards 1235 and 1245 on the higher side. So this is purely intraday play. This bounce only intraday. Don't try to carry any position because आज ऊपर है, कल it could be lower. So there is no what do you say, follow up action in lot of mid cap and small cap counters, which is why even if you see lot of charts लास्ट 8-9 दिन से कोई भी स्टॉक ने प्रीवियस डे हाई अगर क्रॉस किया तो सस्टेन भी नहीं किया है. बहुत लोग ने तो किया ही नहीं है, पर जिसने किया है दे आर नॉट सस्टेनिंग एट हायर जोन्स.
तो जो नीचे से रिकवरी आ रही है, वी शुड प्योरली प्ले एज एन इंट्राडे, keep 1-2% as stop and look for 1-2% purely intraday and exit your position if it's not working well. Sir, M&M levels can we hold for the current month? I think M&M, as I said, because जैसा रन अप आया था वैसे ही the stock is seeing lower tops, lower bottoms, and this EV Tesla play is the main thing which is making M&M थोड़ा सा stock में थोड़ा corrective move आ रहा है, because I think competitiveness and थोड़ा सा market share could also be lost, तो which is why एक corrective move आया है. तो नीचे में 2700 and 2650 are very crucial support. अगर वो होल्ड करता है then we could see the pullback, थोड़ा सा अगर आता है तो we could see a pullback go towards 2850 and 2900, but as of now 2700 and 2650 are very crucial support for M&M. अगर वो होल्ड करता है then we could see a pullback towards 2850 and 2900 on the higher side. Sir, your view on Reliance? So रिलायंस एक कंसोलिडेशन में है, लास्ट 5 दिन से एक रेंज में है, तो अगर ऊपर में इफ आई से 1230, आज 1230 निकल जाता है देन वी कुड सी सम 1-2% का मूव इन रिलायंस. अगर इंटरडे प्ले किसी को करना है तो 1230 के ऊपर they can see buy trigger and keep a support of 1215 and look for target towards 1245 and 1250 on the higher side. These are all purely intraday अगर आपको किसी को प्ले करना है. तो 1230 लास्ट 5 दिन से it is consolidating within that range. तो 1230 के ऊपर we could see some follow up action towards 1245 and 1248 on the higher side, keeping 1212 as support. SBI Life? आई थिंक एसबीआई थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही है डेली स्केल पे. लास्ट ऑलमोस्ट जैन से ऑलमोस्ट 20-30 डे से कंसोलिडेशन मूव में. नीचे में 1435 1440 का सपोर्ट है, ऊपर में 1500 के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है. तो above 1480 I think the stock can see some momentum towards 1520. अगर इंटरडे प्ले किसी को करना है प्योरली ट्रेडिंग 1-2 days, तो above 1480 we could see some action towards 1500 1520 on the higher side, keeping 1454 as the support for SBI Life. The purely trading per se, so we could see some action above 1480 towards 1510 and 1520 on the higher side in SBI Life. 1454 का सपोर्ट है. Sir, Bajaj Finserv target for the month, please. Bajaj Twins are doing relatively well. Bajaj Finserv भी अच्छा मोमेंटम में है, तो 1850 का सपोर्ट है अगर ट्रेडिंग पोजीशन है. एंड ऊपर में we could see a move towards 1935 and 1945 on the higher side. 1950 के आसपास एक दूसरा हर्डल है, तो 1850 के सपोर्ट से look for 1950 1970 on the higher side. Bajaj Finserv. Sir, FL holding from last 3 to 4 years with buying price 51. FL. FL. Yes. That is AF. Air fish. FL. FL. What is FL? And FL again. Okay, FL. What is FL? Okay, Future Lifestyle. What is this? I think penny stock. I don't know. I think ₹1.80. I don't have any view on Future Lifestyle. Sir, NetWeb पर positional view? किसमें? NetWeb. NetWeb. Okay. So NetWeb and Anant Raj, these two stock corrected mainly
Reliance has said that they are going to start up a data center, which is why the stock has corrected almost 2500 से 1400 आ गया है. बट आज नीचे से अच्छी रिकवरी दिख रहा है, तो एक ये पुल बैक मूव ही है. डोंट ट्राई फॉल अ प्रे टू दिस पुल बैक मूव्स. तो ये पुल बैक मूव कुड गेट एक्सटेंडेड टुवर्ड्स 1550 एंड 1600. वहां पे एक फिर से रेजिस्टेंस पॉइंट है टुवर्ड्स 1600. तो अगर ऊपर 1600 के आसपास आता है, देन यू शुड ट्राई टू एग्जिट networks. Sir, RCF. So RCF ने एक अच्छा आज बुलिश पैटर्न है, बट कैंडलस्टिक है, कोई मेजर ऐसा मूव नहीं. इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लोस लास्ट 5-6 दिन से. तो 134 के ऊपर निकलता है, देन वी कुड सी मूव टुवर्ड्स 135, 137 एंड 139. नीचे में 130 का सपोर्ट है. नो मेजर ऐसा कोई सेटअप नहीं है, बट नीचे से रिकवरी है 130 के सपोर्ट से. लुक फॉर 137, 139 on the high side in RCF. And this will be the last question for the day, sir. View on defense sector for weekly holdings. So defense आज, as I said, HAL, BEL, BDL में अच्छा मोमेंटम है, but these are all नीचे से रिकवरी है. कोई ऐसा नहीं है कि the bottom has been made और कोई confirmation नहीं है. Even for shipbuilding, Mazda Dock and Cochin and GRSE, they are showing some pullback moves. Even RVNL, IRFC, Econ, these are all pullback moves. तो फिलहाल एक करेक्टिंग मोड में है. तो 4-5% का अगर मूव आता है, देन यू शुड, अगर ट्रेडिंग पर से है, देन ऊपर लेवल्स में प्रॉफिट बुक करके दे कुड सी फर्दर नीचे में बेटर एंट्री पॉइंट. तो दीज आर ऑल ओनली प्योरली पुल बैक मूव्स. तो डोंट फॉल प्रे टू जो 2-4 दिन का मूव आता है, डोंट फॉल प्रे फॉर दैट. Well, that will be all for the morning session. Thank you, everyone. So, thank you, Nikun sir. See thank you you. again at the afternoon session and the 11:30 a.m. session. Thank you, everyone. Thank you. Have a good day.